Assalamu alaikum. Advocate Amir Hamza here with you. Today I will discuss In the Supreme Court of Pakistan, Appellate Jurisdiction, present, Mr. Justice Amin Uddin Khan Mr. Justice Syed Hasan Azhar Rizvi ARG, Criminal Petition No. 1329 of 2023, against order dated the 11th of October 2023, passed by the Lahore High Court, Multan Bench. Multan in Criminal Miscellaneous Numbers 6567B of 2023 and 6296B of 2023, Ailu Fahad Hussain son of Gautam Muhammad. Petitioners and another, versus the state through Prosecutor General. Respondents Punjab, Lahore and another. For the petitioners Sada Muhammad Latif Khan Khosa Senior, ASC Mr. Aftab Alam Yazir, ASC Syed Rifakar Hussain Shah, AOR Mr. Muhammad Yaffa. Additional Prosecutor General, Punjab Amjad Khalid, Inspector Kazam Munir, SI, via video link from Lahore, the 19th of January 2024 for the complainant for the state date of hearing judgment Syed Hasan Azhar Rizvi. J. Through this petition filed under Article 185, 3, of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, the petitioners, namely, Mujahid Hussain and Hussain Baksh have assailed the order dated the 11th of October 2023, passed by the learned judge of the Lahore High Court, Multan Bench. Multan, the High Court, whereby through Criminal Miscellaneous Numbers 6567B of 2023 and 6296B of 2023 post-arrest bail was declined to them. 2. Succinctly, facts of the case are that the petitioners were arrested in case FIR number 721 dated the 4th of July 2023 lodged by Muhammad Baba son of Noor Hussain, registered under sections 302, 324, 148, 149 and IO9, P.C. at Police Station Rohil Anwar, District Muzaffargarh, 3 Criminal Petition No. 1329 of 2023-2 stating therein that on the 3rd of July 2023 at about 11:30 p.m. the complainant along with Muhammad Nadir, his brother and Muhammad Ilyas son of Muhammad Baksh, Caste Rathib went to the house of their relative Murad Hussain, situated at Chanmore Chowk for wishing Eid greetings where Nazar Hussain son of Allah Baksh and Ajaz Hussain son of Muhammad Baksh Caste Rathib residents of same village were also present. After a while they all were going to drop Muhammad Ilyas to his house when they reached Chanmore Chowk. In the meanwhile accused Hussain Baksh and Sadiq Raza, sons of Muhammad Sharif, Caste Darkan, armed with rifle-type arms, Mujahid Hussain son of Ghulam Muhammad, Caste Jar, armed with rifle-type arm, Abdul Wahid Nazir son of Noor Muhammad Caste Darkan, armed with .30 bore pistol. Residents of Monzajar Rathib, Abdul Aziz son of Allah Wasaya, Caste Darkan, resident of Manakpur, with rifle-type arm and MST. Shamshad Mai, wife of Riaz Hussain, Caste Darkan, resident of Manakpur, while boarding on a car as well as motorcycle came there and MST. SHMN Shad Mai raised a tatkara that the complainant's party has disgraced her today therefore none of them should be spared. Hussain Baksh started straight firing on Muhammad Nadir, which hit him on left side of his chest. Whereas Mujahid Hussain also started firing from his rifle-type weapon which hit Muhammad Nadir on right side of his chest who succumbed to the injuries at the spot. Sadiq Raza fired from his rifle which landed on the left wrist beneath the elbow joint. Abdul Wahid fired at Nazar Hussain with his pistol, which landed on the left side of the ribs of Nazar Hussain.
Abdul Aziz also made straight firing from his rifle on Jaz Ahmed, but fortunately he escaped, upon which Abdul Aziz attacked Jaz Ahmed with his rifle and hit the butt of his rifle on his head, which landed on his head near left ear. The people of the vicinity gathered at the spot in consequence of hue and cry and firing. The witnesses Muhammad Qasim, Asif Iqbal and other inhabitants reached at the spot. Now we discuss in Urdu. Supreme Court of Pakistan appeal का दायरा अख्तियार. Mr. Justice Aminuddin Khan, Mr. Justice Syed Hasan Azhar Rizvi, फौजदारी पिटीशन नंबर है 1329 ऑफ 2023 लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान की तरफ से 11/10/2023 के हुक्म के खिलाफ. प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब लाहौर और दरख्वास्त गुजार है सरदार मोहम्मद लतीफ़ खान के लिए खोसा जनाब आफ्ताब आलम, सैयद रफ़ाकत हुसैन, जनाब मोहम्मद जाफ़र, एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल अमजद खालिद, इंस्पेक्टर काज़म मुनीर, ASI लाहौर से वीडियो लिंक. शिकायत कुनिंदा के लिए समाअत की तारीख. फैसला. सैयद हसन अज़हर रिजवी जस्टिस. दायर की गई इस दरख्वास्त के ज़रिए इस्लामी जमहूरिया के आइन के आर्टिकल 185 सब क्लास 3 के तहत पाकिस्तान दरख्वास्त गुजारों यानी मुजाहिद हुसैन और हुसैन बख्श ने मोरखा 11/10/2023 के हुक्म नामे पर हमला किया, जिसे माहिर जज ने मंजूर किया. लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच, जिसके ज़रिए फौजदारी मुतफ़रका नंबर 656 बी ऑफ 2023 और 6296 बी ऑफ 2023 बाद अज गिरफ्तारी इनकी ज़मानत मुस्तरद कर दी गई. पॉइंट नंबर 2. मुख्तसर केस के हक़ाइक़ ये हैं कि दरख्वास्त गुजार मोहम्मद की तरफ से दर्ज FIR नंबर 721 मोरखा 4/7/2023 में गिरफ्तार बाबर वल्द नवाज हुसैन के खिलाफ ज़ेर दफ़ा 302, 324 और 148 दर्ज. 149 और 109 PPC थाना हिलावाह ज़िला मुजफ्फरगढ़. फौजदारी पिटीशन नंबर है 1329/2023.2. इसमें बताते हुए कि 3/7/2023 को तकरीबन 11:30 PM शिकायत कुनिंदा मोहम्मद नादर और इसके भाई और मोहम्मद इलियास वालिद के साथ मोहम्मद बख्शजाद रतीब अपने रिश्तेदार के घर गए. ईद की मुबारकबाद देने के लिए चंद मोड़ चौक पर मौजूद मुरीद हुसैन जहां नज़र हुसैन वल्द अल्लाह बख्श और एजाज हुसैन वल्द इसी गांव के रहने वाले मोहम्मद बख्शजाद रतीबी भी थे. मौजूदा थोड़ी देर बाद वो सब मोहम्मद इलियास को इसके पास छोड़ने वाले थे. घर जब चंद मोड़ चौक पहुंचे तो इसी दौरान मुलज़मान हुसैन बख्श और सादिक रजा साहबजादे मोहम्मद शरीफ साथ राइफल किस्म के असले से लैस दरखान मुजाहिद हुसैन वल्द गुलाम मोहम्मद साथ 4 राइफल टाइप बाजू से लैस अब्दुल वाहिद नासर नूर मोहम्मद साथ दरखान वल्द 30 बोर पिस्तौल से मुसल्ला. मुनजा जोड़ा रतीब के रहायशी अब्दुल अजीज वल्द अल्लाह वसाया ज़ात दरखान मांगापुर का रहायशी राइफल टाइप बाजू के साथ और मोहतरमा शमशाद रियाज हुसैन की बीवी माईजाद दरखाना सकना मांगापुर जबकि गाड़ी के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर वहां आए और मोहतरमा शमशद माई ने तज़किरा उठाया कि शिकायत कुनिंदा की पार्टी ने इसे रुस्वा किया है, इसलिए आज मैं इनमें से किसी को भी नहीं बख्शा जाना चाहिए. हुसैन बख्श ने शुरू किया और मोहम्मद नादर पर सीधी फायरिंग की जो इनके बाईं जानब लगी, जबकि मुजाहिद हुसैन ने भी अपनी राइफल से टाइप से फायर शुरू कर दिए, जिस हथियार से मोहम्मद नादर को सीने में गोली लगी जाने मर गया. जख्मों की ताब न लाते मौके पर ही दम तोड़ गया.
सादिक रजा ने अपनी राइफल से फायर किया जो कहीं कोहनी के जोड़ के नीचे बाईं कलाई पर आ लगा। अब्दुल वाहिद ने फायरिंग कर दी नजर हुसैन पर अपनी पिस्तौल के साथ जो पसलियों की बाएं से गिरा था। नजर हुसैन के अब्दुल अजीज ने भी अपनी राइफल से सीधी फायरिंग की। एजाज अहमद लेकिन खुशकिस्मती से बच गए, जिस पर अब्दुल अजीज ने हमला किया और एजाज अहमद ने अपनी राइफल का बट इसके सर पर मारा, जिससे बाएं कान के करीब इसके सर पर उतरा। आसपास के लोग जमा हो गए। चीखों पुकार और फायरिंग के नतीजे में स्पॉट गवाह मोहम्मद कासिम, आसिफ इकबाल और दीगर वकील मौके पर पहुंचे। 29 of 2023-3, the accused persons fled away from the place of occurrence. The motive behind the occurrence was a civil dispute over a house in between E. Jaz Ahmed and MST. Shamshad Mai. 3. The petitioners were arrested by the police on the 25th of July 2023. They filed applications for grant of post-arrest bail in the Court of Learned Additional Sessions Judge, Muzaffargarh, which were dismissed to i.e. order dated the 13th of September 2023. The petitioners and other co-accused, namely Sadiq Raza and Abdul Wahid Nazir, applied for the grant of post-arrest bail before the High Court by filing criminal miscellaneous numbers 6567B of 2023, Mujahid Hussain etc. versus the State, and 6296B of 2023, Abdul Wahid Nazir etc. versus the State, which were decided together. The post-arrest bail was refused to the petitioners, whereas to that of co-accused persons, namely Sadiq Raza and Abdul Wahid Nazir, was granted vide impugned order dated 11/2023, hence these petitions. 4. The learned counsel for the petitioners argued that the petitioners have falsely been roped in the case by the complainant with mortified intention in connivance with the police, after suppressing the real facts. Further argues that during the course of investigation, the contents of the crime report were contradicted and an entirely different story was surfaced on record. 5. It has brought on record and confirmed by the learned Additional Prosecutor General, Punjab, that on the recommendation of the Regional Standing Board, RIB, Dera Ghazi Khan, the investigation of the case was entrusted to Inspector RIB, Dera Ghazi Khan, who submitted its report to SP RIB, who concurred with the investigation report of Regional Investigation Branch Dera Ghazi Khan. Vide Order No. 148, RIB dated 13 of .2024 passed by the DPO Dera Ghazi Khan, whereby both the petitioners were discharged along with other co-accused. Lastly contended that keeping in vice 6W the facts and 3 Criminal Petition No. 1329 of 2023-4 circumstances of the case, after submission of the comprehensive report by the investigating agencies. It is a case of further inquiry which falls within the ambit of subsection 2 of section 497 crossing PC. In support of his contentions, following case law has been cited. In the case of Muhammad Umar WWA's Barkat Ali versus the State, 2023 SCMR 330. This court has held as under. It is settled law that liberty of a person is a precious right, which has been guaranteed under the Constitution of Islamic Republic of Pakistan. 1973, and the same cannot be taken away merely on bald and vague allegation. It is the case of TiVo versions, and it is established principle of law that where there is a case of 2 versions narrated before court, it squarely falls within the ambit of section 497. 2.
In the case of Farhad Hussain versus the State, 2023 SCMR 364, this court held as under the perception and discernment of the expression, further inquiry, is a question which must have some nexus with the result of the case, and it also presupposes the tentative assessment which may create doubt with respect to the annulment of accused in the crime. The raison d'etre of setting the law into motion in the criminal cases is to make an accused face the trial and not to punish an under-trial prisoner or let him rot behind the bars. It is a well-settled principle of the administration of justice in criminal law that every accused is innocent until his guilt is proved, and this benefit of doubt can be extended to the accused Ellen. At bait stage, if the facts of case so warrant. The basic philosophy of criminal jurisprudence is that prosecution has to prove its case beyond reasonable doubt, and this principle applies at all stages, including pre-trial and even at the time of deciding whether accused is entitled to bail or not, which is not a static law but growing all the time, molding itself according to the exigencies of the time. In the case of Gui Muhammad versus TH State, 2023 SCMR 857, this court held as under. This court has time and again held that liberty of a person is a precious right, which cannot be taken away unless there. Now we discuss in Urdu. मुलजमान जैब को से फरार हो गए। मकसद वाक़या के पीछे दरमियान एक घर पर सिविल तनाज़ा था। अहमद और मोहतरमा शमशाद माई। नंबर 3, दरख्वास्त गुजारों को पुलिस ने 25/7/2023 को गिरफ्तार किया था। उन्होंने अदालत में बाद अज़ गिरफ्तारी ज़मानत की दरख्वास्त दायर की। एडिशनल सेशन जज मुजफ्फरगढ़, जिन्होंने बरतरफ कर दिया कि आर्डर मोर खां 13/9/2023 दरख्वास्त गुजार और दीगर शरीक मुलजमान यानी सादक रज़ा और अब्दुल वाहिद नासर ने बाद अज़ गिरफ्तारी ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी की दरख्वास्त दे दी। 2023 के फौजदारी मुतफ़रका नंबर B656 दर्ज करा के हाई कोर्ट मुजाहिद हुसैन वगैरह बामुकाबला रियासत B6296 ऑफ 2023 अब्दुल वाहिद नासर वगैरह बामुकाबला रियासत, जिसका फ़ैसला एक साथ किया गया। बाद अज़ गिरफ्तारी ज़मानत दरख्वास्त गुजारों को इनकार कर दिया गया था कि जबकि शरीक मुलजमान को यानी सादक रज़ा और अब्दुल वाहिद नासर को बरी ज़िम्मा करार दिया गया। आर्डर मोरखा 2023 मोरखा 11/2023। इसलिए ये दरख्वास्तें नंबर 4 दरख्वास्त गुजारों के माहिर वकील ने दलील दी कि शिकायत कुनिंदा के ज़रिए दरख्वास्त गुजारों को झूठे तरीके से केस में फंसाया गया है। पुलिस के साथ मिली भगत से मेटाफाइड अदारे को दबाने के बाद हकीकी हक़ाइक़ मज़ीद इस्तेलाल करता है। तहक़ीक़ात के दौरान जराइम की रिपोर्ट दर्जाजात मुतज़ाद और बिल्कुल मुख्तलिफ थे। कहानी रिकॉर्ड पर आ गई। नंबर 5 ये रिकॉर्ड लाया और सीखने वालों की तस्दीक की है। एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब की सिफारिश पर रीजनल स्टैंडिंग बोर्ड RIB डेरा गाजी खान की तहक़ीक़ात केस इंस्पेक्टर RIB डेरा गाजी खान को सौंपा गया, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट SP RIB को पेश की, जिसने तहक़ीक़ात से इत्तफ़ाक़ किया। रीजनल इन्वेस्टिगेशन ब्रांच डेरा गाजी खान की रिपोर्ट वेड आर्डर नंबर RIB 148 मोरखा 13/2024 DPO डेरा गाजी खान ने मंजूर किया, जिसके तहत दोनों दरख्वास्त गुजारों को दीगर साथियों के साथ छुट्टी दे दी गई। मुल्ज़म आखिर में दावा किया कि हक़ाइक़ को सामने रखते हुए 3/2023 की फौजदारी पिटीशन नंबर 1329 नंबर 4 केस के हालात जामा रिपोर्ट जमा कराने के बाद तफ्तीशी एजेंसियों की तरफ से ये मज़ीद तफ्तीश का मामला है, जो आता है सेक्शन 497 CRPC के जाली दफ़ा 2 के दायरा कार में इसकी हमायत में तनाज़ा
مندرجہ ذیل کیس قانون کا حوالہ دیا گیا۔ محمد عمر وسوس برکت علی بامقابلہ ریاست 2023 کے معاملے۔ اس عدالت نے مندرجہ ذیل فیصلہ کیا ہے۔ یہ طے شدہ قانون ہے کہ انسان کی آزادی ایک قیمتی حق ہے جس کی ضمانت آئین اسلامی کے تحت دی گئی ہے۔ جمہوریہ پاکستان 1973 وہی نہیں لیا جا سکتا، صرف گنجے اور اوق کے الزام سے دور کا معاملہ ہے۔ عدالت کے سامنے بیان کردہ ایک کیس یہ ہے کہ قطعی طور پر سیکشن 2497 سب کلاس 2 کے دائرے میں آتا ہے۔ فواد حسین بامقابلہ ریاست SCMR 364 2023 اظہار کا ادراک اور فہم۔ مزید انکوائری ایک ایسا سوال ہے جس کا کوئی نہ کوئی ضرور ہے۔ کیس کا نتیجہ اور یہ بھی پہلے سے قیاس کرتا ہے کہ تشخیص جس کے حوالے سے شکوک پیدا ہو سکتے ہیں، جرم میں ملزم کی سزا کی غلطی۔ فوجداری مقدمات میں قانون کو حرکت میں لانا۔ ایک ملزم کو مقدمے کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور زیر سماعت کو سزا نہ دینا، قید کر دیے یا سلاخوں کے پیچھے سڑ جائیں، یہ ایک اچھی طرح سے آباد ہے۔ فوجداری قانون میں انصاف کی انتظامیہ کا اصول۔ ہر ملزم اس وقت تک بے قصور ہے جب تک اس کا جرم ثابت نہ ہو جائے۔ شک کا فائدہ ملزم ایلن تک بڑھایا جا سکتا ہے۔ اگر کیس کے حقائق اس کی ضمانت دیتے ہیں کا بنیادی فلسفہ فوجداری فقہ یہ ہے کہ استغاثہ کو اس کا ثبوت دینا ہوتا ہے۔ مقصود شخص سے بالا تر معاملہ اور اس اصول پر لاگو ہوتا ہے۔ تمام مراحل بشمول پری ٹرائل یہاں تک کہ فیصلہ کرنے کے وقت ملزم ضمانت کا حقدار ہے یا نہیں، جو کہ جامد نہیں ہے۔ قانون لیکن ہر وقت پڑھ رہا ہے، خود کو اس کے مطابق ڈھال رہا ہے، وقت کی ضرورت ہے۔ اس کے اندر کیس نمبر پیش کیا گیا SCMR 857 2023 مندرجہ ذیل کے طور پر۔ اس عدالت نے بار بار ایک شخص کی اس آزادی کو برقرار رکھا ہے، قیمتی حق ہے جسے چھینا نہیں جا سکتا جب تک نہ ہو 1929 of 2023-5 are exceptional grounds to do so. Merely on the basis of bald allegations, the liberty of a person cannot be curtailed. In these circumstances, the petitioner has made out a case for bait as his case squarely falls within the purview of section 497(2), crossing page C entailing for further inquiry into his guilt. 6. On our query, Mr. Muhammad Yaffa, Additional Prosecutor General, Punjab confirmed the discharge of the petitioners by the Regional Investigation Branch, Dera Ghazi Khan as per final report dated the 13th of January 2024. The law officer has supported the contentions of the learned counsel for the petitioners qua exoneration, discharge of the petitioners by the Regional Standing Board. Dera Ghazi Khan and confirmation of the approval of the final report dated the 13th of January 2024 by the DPO Dera Ghazi Khan, referred to above. A copy thereof has been placed before us at the time of hearing of the case. 7. Mr. Aftab Alam Yazir, learned counsel while arguing the matter on behalf of the complainant has vehemently opposed the grant of post-arrest bail to the petitioners and placed reliance to the cases reported as Amir Faraz versus the State, 2023 SCMR 308, Muhammad RABQ versus the State and others, PLD 2022 South Carolina 694, Mudassar Attav and another versus the State, 2010 SCMR 1861, and Muhammad Aslam and others versus the State, PLD 1967 South Carolina 539. 8. We have heard the learned counsel for the parties, so also the learned law officer, and scanned the entire material available on the record with their able assistance. 9.
It reflects from the record that on the recommendation of the Regional Standing Board, Dera, Hazi Khan, the investigation was changed and fresh investigation was conducted by the Inspector RIB under the supervision of the SP RIB. The investigating agencies on the basis of the material available on the record came to the conclusion that both the petitioners and other co-accused be discharged. Final report whereof was submitted to the trial court but no order has been passed. 3. Criminal Petition No.1329 of 2023-6A is as yet in view of the impugned order of the High Court. The DPO, Dera Ghazi Khan, has endorsed the same wide order No. 148, RIB dated the 13th of January 2024. 10. We are convinced that the case law cited at the bar by the learned counsel for the petitioners is true exposition of law. Whereas the law cited at the bar by the learned counsel for the complainant is distinguishable to the facts and circumstances of the present case. 11. In view of the above, we inferred that it is a case of two versions, one narrated by the complainant's party in the FIR and the second by the investigating agencies on behalf of the state after conducting fresh investigation under the supervision of an SP, and the final report has been approved by the DPO. Dera Ghazi Khan. The petitioners have made out a case for grant of bail as their case squarely falls within the purview of Section 497, 2, Crossing PC. 12. Consequently, this petition is converted into an appeal and allowed. The petitioners are admitted to post-arrest bail subject to furnishing their bail bonds in the sum of 100,000 rupees per each with one surety and the like amount to the satisfaction of the trial court. 13. The above observations are tentative in nature and will have no bearing upon subsequent proceedings during the trial, as the trial court is required to decide the case on its own merits without being influenced by any observation made in this judgment. Bench IV Islamabad 19.01.2024 Mr. Now we discuss in Urdu. ऐसा करने की गैर मामूली बुनियादें महज इल्ज़ामात से किसी शख्स की आज़ादी सल्ब नहीं की जा सकती। इन हालात में दरख्वास्त गुजार ने केस बुनियाद है, जो कि इसका केस मुकम्मल तौर पर सेक्शन के में आता है, को इसके जुर्म के बारे में मज़ीद इंक्वायरी के लिए कहा गया। 497 सब क्लास 2 CRPC नंबर 6 हमारे इस्तफसार पर जनाब मोहम्मद जाफर एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब ने दरख्वास्त गुजारों की बरतरफी की तस्दीक की। रीजनल इन्वेस्टिगेशन ब्रांच डेरा गाजी खान की हतमी रिपोर्ट के मुताबिक 13/1/2024 लॉ ऑफिसर इनके एतराज़ात की हमायत की है। दरख्वास्त दहिंदागान के लिए वकील ने माफ़ी बर्खास्तगी के लिए दरख्वास्त गुजार रीजनल स्टैंडिंग बोर्ड डेरा गाजी खान की तरफ से 13/1/2024 की हतमी रिपोर्ट की मंजूरी की तस्दीक। DPO डेरा गाजी खान, जिनका ऊपर हवाला दिया गया, इनकी एक कापी दी गई है। केस की समाअत के वक्त हमारे सामने रखा गया। नंबर 7 जनाब आफ्ताब आलम यासर ने बहस करते हुए वकील शिकायत कुनिंदा की जानिब से मामले ने ग्रांट की शदीद मुखालफत की। दरख्वास्त गुजारों को गिरफ्तारी के बाद जमानत दी और मुकदमे पर इन्हिसार किया। आमर फराज बामुकाबला रियासत SCMR 308 ऑफ 2023 की तौर पर रिपोर्ट किया गया और PRD 2022 SC 694 एक और SCMR 1861 ऑफ 2010 और मोहम्मद असलम और दीगर PRD 1967 SC 539 पैरा नंबर 8। हमने फ्री कैन के लिए
فری کین کے وکیل کو سنا اور لا آفیسر کو اس پر سکھایا۔ اس پر دستیاب تمام مواد کو اسکین کیا گیا اور ان کی قابل مدد کے ساتھ ریکارڈ کرے۔ یہ ریکارڈ سے ظاہر ہوتا ہے کہ سفارش پر ریجنل اسٹینڈنگ بورڈ ڈیرہ غازی خان تحقیقاتی کمیٹی تھی۔ انسپکٹر آر آئی بی کے ذریعے تبدیل اور تازہ تحقیقات کی گئی کی نگرانی میں تحقیقاتی اداروں پر ایس پی آر آئی بی اور ریکارڈ پر موجود مواد کی بنیاد پر اس نتیجے پر پہنچا درخواست گزاروں اور دیگر شریک ملزمان کو بری کر دیا جائے۔ حتمی رپورٹ جس کو ٹرائل کورٹ میں پیش کیا گیا لیکن کوئی حکم جاری نہیں ہوا۔ اس کے بعد آئی ایس پی ابھی تک ہائی کورٹ کے غیر قانونی حکم کے پیش نظر ڈی پی او اور ڈیرہ غازی خان نے اسی وسیع آرڈر نمبر آر آئی بی 148 کی توثیق کی ہے۔ 13/1/2024 پیرا نمبر 10 ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ بار میں کیس قانون کا حوالہ دیا گیا ہے۔ درخواست گزاروں کے لیے وکیل قانون کی حقیقی نمائش ہے جبکہ شکایت کنندہ کے وکیل کے ذریعے بار میں قانون کا حوالہ دیا گیا۔ موجودہ کیس کے حقائق اور حالات نمبر 11 مندرجہ بالا کو دیکھتے ہوئے ہم نے اندازہ لگایا ہے کہ یہ 2 کا معاملہ ہے۔ ایف آئی آر میں شکایت کنندہ کی پارٹی کے ذریعے بیان کردہ ورژن ہے اور ریاست کی جانب سے تفتیشی ایجنسیوں کے بعد دوسرا ایک ایس پی کی نگرانی میں تازہ تحقیقات کر رہے ہیں۔ حتمی رپورٹ ڈی پی او اور ڈیرہ غازی خان نے منظور کر لی ہے۔ درخواست گزاروں نے اپنے کیس کے طور پر ضمانت کی منظوری کے لیے کیس بنایا ہے۔ سیکشن 497 سب کلاس 2 کے دائرے میں آتا ہے۔ پیرا نمبر 12 نتیجتاً اس پٹیشن کو اپیل میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ درخواست گزار ضمانت کے بعد گرفتاری کے لیے داخل ہے۔ ہر ایک کے ساتھ قاعدہ سینکڑا 1 لاکھ کی رقم اپنے ضمانتی مچلکے جمع کرانا اور ٹرائل کورٹ کے اطمینان کے لیے اتنی رقم ضمانت۔ نمبر 13 مندرجہ بالا مشاہدات عارضی نوعیت کے ہیں اور ہوں گے۔ مقدمے کی سماعت کے دوران بعد میں کی گئی کارروائیوں کو بطور مقدمے کا کوئی اثر نہیں۔ عدالت کے مقدمے کا فیصلہ اپنی مرضی کے مطابق کرنے کی ضرورت ہے۔ اس فیصلے میں کیے گئے کسی بھی مشاہدے سے متاثر No, it's and this is a judgment of bail. Or please request to all friends, please share this judgment to other friends, and please share or subscribe to my channel for the motivation. Jazakallah.